Side world. Anyway, Sana, let's just talk about the sort of general feel about the tournament, because here we are. Just to remind people, this was meant to be played in India originally. It's been rescheduled for UAE. The three venues, three slightly different pitches. We've got things like dew, we've got the toss, we've got all sorts of things that have influenced the tournament so far. So let's start with what I, in football terms, refer to as the left wing. You know, the attacking left side here and the attacking right side here. Let's start with the left wing and see what they've made of the tournament so far. जी राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं। टूर्नामेंट देखें, शुरू में ही हमने कह दिया था कि एसोसिएट मेंबर्स ने को लॉन्गर कर दिया। कल आकिब से भी बात हो रही थी मैच के बाद बांग्लादेश के, क्योंकि बहुत नाराज है बांग्लादेश के ऊपर। तो टूर्नामेंट इसको बेहतर बनाने की तजावीज़ हो सकती हैं। जैसे हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, PSL, IPL, डबल लीग 16, 8 टीम्स की होती हैं। तो यहाँ पे भी 6 और 8 टीम की टॉप टीम होती है, उनके डबल लीग हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले हो सकते हैं। अब नमीबिया ठीक है, इनके अपने इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन हम फ्रेंचाइज को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। 2.5 मंथ IPL, 2 मंथ PSL, कैरिबियन लीग, बिग बैश। लेकिन ICC के इवेंट्स में क्या हो रहा है? ICC के इवेंट में वो कंट्री खेल रहे हैं जिसको आप नहीं खिलाना चाहेंगे, अपने मुल्क नहीं बुलाना चाहेंगे बायलैटरल सीरीज में। तो इसका मतलब है उनकी वर्थ नहीं है। जब आपकी वर्थ नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? टॉप 18 में करें, और उसकी डबल लीग करते हैं तो उसमें एक इवेंट क्या है, एक राउंड डिफरेंट होता है और दूसरा राउंड डिफरेंट होता है, वापस आने का मौका मिलता है। अगर पाकिस्तान बाहर हो रहा है लेकिन उनको पता है कि आगे मैचेस मेरे हैं, तो इस तरह से ये हो सकता है। ऑल टुगेदर पाकिस्तान के लिए ये इवेंट बहुत ही जबरदस्त रहा। जिस तरह पाकिस्तान का शेप अप हुआ था टीम का, इतना अच्छा नहीं था। टीम चेंज हुई, बोर्ड चेंज हुआ, चेयरमैन चेंज हुआ, टीम चेंज हुई, मतलब उनका खेलने का स्टाइल चेंज हुआ। तो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो बेहतरीन है, और दूसरी इंग्लिश टीम के लिए, इंग्लैंड की टीम जिस तरह खेल रही है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखी हुई है। तो इस इवेंट में कहीं उतार चढ़ाव आए, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट आप नहीं कह सकते ICC के। एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एसोसिएट नेशंस को भी हम स्पेस दें? क्योंकि नामीबिया ने आपका प्रूफ किया है। नामीबिया की क्रिकेट आप देखें तो बांग्लादेश ने जो क्रिकेट खेली है, जो कि फुल मेंबर है, उसने क्रिकेट खेली। बिल्कुल पाकिस्तान 5 T20 के लिए बुला ले इसको, नामीबिया को। ये बात नहीं, मैं कह रही हूँ साइड बाय साइड जब आपकी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। मेरा नहीं है, मेरा अपना है। इसमें ये कि मेरा ये वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है ये। बाकी जिसकी जो सोच है वो उसके ऊपर बात कर सकता है। मेरी अपनी सोच है कि मैं नहीं तबसरा करना चाहता नामीबिया के ऊपर। करना तो पड़ा है, मेरी अपनी सोच है, करना पड़ा। बांग्लादेश नहीं बनाया आकिब भाई को। देखिए फैक्ट है कि आपके सामने ही हुआ है सारी चीजें। तो आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, और इतना ह्यूज तकरीबन 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है भी इसका, ICC का 2.6 बिलियन का। तो ये क्रिकेट दिखा रहे हैं आप लोग 6.6 बिलियन, 2.6 बिलियन लेके, मतलब ये गोज डाउन। अजहर भाई, वेस्ट इंडीज की टीम भी एसोसिएट नेशन को अगर हम कंपेयर करें, उनके साथ भी कोई बहुत जबरदस्त, उन्होंने भी क्रिकेट नहीं खेली। तो ऑफ डेज ऑन डेज आते हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हैं कि एसोसिएट का अलग कोई टूर्नामेंट होना चाहिए, या कुछ इस तरह का बीच का कोई रास्ता होना चाहिए कि हम दोनों चीजों को साथ देख सकें? देखिए, जहाँ तक आपने वेस्ट इंडीज़ की बात की ना, डेफिनेटली वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। उतार चढ़ाव गेम का हिस्सा है, कभी आप अच्छा खेलते हो, कभी आप बुरा खेलते हो। जो राशिद भाई के कहने का मकसद है ना, या जो आकिब भाई बात कर रहे थे कल, कि क्रिकेट हमें वो देखने को नहीं मिली। इसीलिए आज वहाँ पे अगर हम देखें, इंडिया में लोग बैठ के कह रहे हैं कि IPL इज बिगर ब्रांड देन द ICC वर्ल्ड कप। वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमें इस तरह की क्रिकेट देखने को मिल रही है, इस वजह से सब लोग बात करते हैं कि हमारा ये ब्रांड जो है इतना बड़ा नहीं है। जो राशिद भाई ने बात की कि ICC को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने जो है ना, जो 8 नेशन है या 10 नेशन है, जो इनको हम किस तरह इनकी क्रिकेट इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें ग्रास रूट में हम किस तरह जा सकते हैं, कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ICC के, अगर वो अपनी क्रिकेट को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जो नामीबिया है या मिनस कंट्रीज हैं, इनका सारा साल टूर्नामेंट होना चाहिए। अब होता है क्या, जैसे आकिब भाई बात कर रहे थे कि जब आप क्वालिफाई किया, आपने लड़के इकट्ठे कर लिए, वहां से आपके लड़के आ गए और फिर आपने अपनी टीम बना दी, तो फिर आप उनको प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दें, ठीक है? तो ताकि उनके टूर्नामेंट्स करवाएं कि सारा साल वो क्रिकेट खेलें। जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे काउंटी क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है, फिर उनकी क्रिकेट बेहतर होगी।
नीक शो की कि हम किस तरह खेलें वहां पे, ठीक है। तो ये चीज हमें नजर नहीं आई थ्रू आउट में। अब 80 रन पे आप क्या बात करेंगे, या टीमें ऐसे आउट हो रही हैं तो आप उस पर क्या बात करेंगे? साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये तो वेन्यू का ज्यादा असर है। जो राशिद भाई बात कर रहे हैं या आकिब भाई बात कर रहे हैं, गुस्से की बात इसी वजह से थी कि आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उमर भाई, आप वेन्यू की अगर हम बात करेंगे, पिचेस अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, डिफरेंट वेन्यूज पे आपको क्या नजर आया, और ओवरऑल टॉस का फैक्टर कितना बड़ा इस टूर्नामेंट में रहा, और वहां पे आईसीसी क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है? देखिए, तीनों वेन्यू जो है डिफरेंट खेले थ्रू आउट द वर्ल्ड कप तक जितने भी मैचेस हुए। अगर आप दुबई साइड पे आइए तो दुबई के जो पिचेस है वो तो बेहतर होते हैं, उसमें अच्छा बाउंस होता है। जो पास में भी हम जितने खेले उसमें बाउंस होता है। और वहाँ पे एक तो ये कि आई थिंक वहाँ मैचेस इतने ज़्यादा नहीं होते बनिस्बत जो अबू धाबी या शारजा में। तो तीनों वेन्यू डिफरेंट प्ले कर रहे थे। जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे शारजा में कि वहाँ पे अच्छी विकेटें मिलेगी बैटिंग के लिए, जो पास उसकी हिस्ट्री है, लेकिन वो टोटली अपोजिट रहा। उस पर लो बाउंस इतना अच्छा नहीं था। और अगर आप देखें तो तीनों वेन्यू में मेरे ख्याल से चेजिंग साइड वो ज़्यादा जीती है। अगर आप अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी में 8 में से 6 जो मैचेस है वो चेस करते हुए जीते गए। और अबू धाबी जिस तरह है वहाँ पे जो इसकी अभी लास्ट जो 2021 में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे मोस्टली फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया है। 76 मैचेस डोमिनेट किया फास्ट बॉलर ने। ठीक है, थैंक यू सो मच। So the overall, there's still a lot of anger on and annoyance on the fact that the way the tournament, the World Cup tournament has been, especially with the associate nations, the quality of cricket is not there. So a lot of people who are test cricketers or want to comment on cricket, they are not enjoying the quality as they would have liked. So that is one thing that they want ICC to look into. And the other thing is, of course, the venues. That the venues, because of these venues, there have been unpredictable scores. The toss has played a vital role in Abu Dhabi, especially fast bowlers have had a say. That's the overall. Okay, interesting, because there are a lot of things that have been catching the attention of those watching this. Let's address first the dilemma. If ICC want to promote the game around the world, they have to allow. I mean, for instance, we have Namibia and Scotland who've fought their way through into the Super 12s and are struggling for obvious reasons, although Namibia's performance yesterday had a lot of credit to it. But they are always going to struggle against the top nations. But that is how you try and encourage them. But for the other nations that play that qualifying group, I mean, there's a lot of teams there which it's nice to be part of it. And I heard the expression waste of time, the usual words waste of time. Yes, this is the dilemma, surely, that ICC face. They want to promote the game, and yet you want to have a quality tournament when you're talking about a World T20. Let's first begin with the fact that we should be thankful that we at least have a tournament. Because of what was happening, COVID-19, the pandemic and all that stuff, it's created a different avenue. Mm-hmm. We all know what India brings in terms of cricket, the fans, and we have not really seen that sort of excitement. I think maybe Sonny may be right. Sonny Gavaskar made a statement recently, and he may be right. Okay, what was the statement? Just to clarify what the statement was about the fact that it's not as enjoyable as maybe what you get in the IPL. So which means he was basically making some comparison that, in my opinion, suggests that what everyone's basically saying here, that we're not getting the quality cricket that we should be getting. Dare I ask if Sonny, as a man who, very shrewd man, very famous man, very respected man, makes his living primarily from IPL and India, do you think there might have been a hint of politics in that? I'm not going to go there, but okay, I think there's that's his opinion. I think there's a hint of politics. That's your opinion. That's my opinion. Yeah, and I honestly believe that
to be fair, it's the fact that we have not really seen the quality cricket that we're supposed to see. We heard the panel on the left speak about the fact that there's been some problems, venues, wet ball, the Jew and all that sort of stuff. I don't know whether we would have gotten the same thing in India, but India cricket loving fans, this tournament would have been changed overall. We'll be taken to the UAE. The most that you can see and get at the moment, the fans that you see coming in are the Indian fans and the Pakistani fans. So which means the other countries in itself, in a small way, haven't been represented along those lines as best as they could. Indeed. Well, that would have been the same in India, with one difference. You've probably seen fewer Pakistan fans in India at the tournament, for reasons that we don't need to go into. And you wouldn't have seen hordes of West Indians, all the fans from around the world. In many ways, actually, UAE gives them a chance to come together because you can get to UAE from various places. But you're always going to see the difference. Aki, what do you think about... Actually, I'm going to stick with this India thing because Sunny's comments about IPL versus a World T20. We've seen, if you look at the top teams in this competition, some fabulous cricket. Cricket, which I have to say is still better than any franchise cricket from the top teams alone, for the simple reason you've got all the top players representing their nations. In franchise you have lots of great players, yes, but it's not the same as I don't think it's the same as international teams. And when you're representing your, not to cut across you, when you are representing your country, I think that brings a whole lot more in my opinion. Regardless of whatever tournament you may be involved with, franchise or whatever, whenever you're asked upon to represent your country, that to me is the greatest honor that can ever be bestowed on any individual. So you got to bring it. Yeah. Okay. No, I agree. That's the incumbent responsibility of every player representing a national team, which means that should bring that should have the interest. That should have the interest value for the world watching cricket. Look, I think that's a disappointment. What Sunny felt. Because the problem is when you competing at the top level like World Cup, there shouldn't be an insecurity, a short-term insecurity. It has to be a year-long progress. You know what happens? Same thing goes to West Indies. Their players are not interested playing for the national team throughout the year, and they target World Cups because such format allow them to do this. Because if you have a system like 6 top tier, second tier, third tier, fourth tier, and your progress throughout the year maintain where you stands. Okay, so they don't play for the national team because ICC provide them the opportunity, or there will be a qualifier, you get in there and good for Mariano, but in the end it is a victory that was the worst team to lost only 2 games and then no chance for qualifying at the bigger level. So I think this format needs to address why we waste all our money, ICC money, because the main players are not interested into it. Like West Indies, even India. Today, why they are, Sunny mentioned IPL because in IPL there's no risk of not qualifying or qualifying, and I think the format as such has to be addressed. Yeah. I mean, I agree. If you look at IPL, India wins whatever happens. It's as simple as that. Yes. And I mean, again, I respect Sunny immensely for his contributed to the game over 40, 50 years. But this was obviously, to me, this was a very obvious attempt to deflect from the fact that India have played 2 games without any success when they were expected to be a possible tournament. And still, this statement is undermine international cricket. Yes. This is the dangerous. This is we talked about the other day. This thing going very wrongly moving forward for cricket.
IPL, everything hung up, no international tours at that time, and the other leagues were just running around finding the windows, and why we allow them to grow that big? If you don't stop them here, they're gonna go really bad way. And I think IPL, yes, you can say, biggest tournament in franchise cricket. Yes, fair enough, they make the brand of IPL. Yeah, that's fine. But, we need to look after the world cricket as well. So ICC needs to look at the format, where you can have the, like in IPL, you play twice with each team and have a proper tournament, double league tournament, because what happened, if you lost the toss and you end up burning second, and then you got no chance, 140, 150, and you lost 2 games, like Indian situation at the moment. And the best team can't go to the finals if they have one bad day, they can't qualify. So you need to look after these things, and because this is a brand, we want international cricket and this cricket to go flourish. How we can do that if we have the bad pitches and bad venues, or as I mentioned, we are very lucky to have this tournament, because what happened year back because of COVID and pandemic, I understand that, but we have to look after international. So there's something Sorry, Sana. Do the ICC have the guts enough in order for them to do that? And over the years, I've always been giving the ICC some stick, because I think there's one rule for world cricket, on the other side of world cricket, and there's another rule for franchise cricket. As you say, everything international cricket goes to sleep because of the IPL. Yeah. Making sure that... I thought you were going to say there's one rule for world cricket and one rule for India, but that's obviously leaping into that same trap again. But that's the same thing, actually. I think we just about that. It's just the way of putting it. It's the same thing, yeah. But I mean, ICC want to play a World T20 every 2 years now, don't they? So if they're going to do that, I mean, the other danger, of course, is overdoing world competitions. Yeah. Because if they come around every 20 seconds, that devalues it as well. You want it to be special. Yeah, I mean, there was at one point there was a proposal of even bringing it to 1 year, because of the overall model of how it works, because everything now sells through TV, and if you don't have a big tournament, there's nothing to sell. So I totally agree with this, that there should be a value for the World Cup. It should be after at least 2 years for the T20 and 4 years for the one days. But the only thing the point I would want to make here, as we are talking about the associate nations and the double leagues, that we have seen Bangladesh in 3 or 4 matches, they have played the similar kind of cricket, and we have given them 20 years to develop. If we do not involve new nations to come into cricket, what's the future of cricket? So I mean, it's a very fine balance. I just want to complete that. And similarly, it's West Indies. Similarly, Ireland. We have invested so much money and opportunity with Ireland. And if we are not going to have someone like Namibia, who have fought well, who have performed yesterday, also they made 144 runs. So if we are not going to have avenues and opportunities for them, and what's the guarantee of having high-class matches every time if you are only going to have India and West Indies and Bangladesh, because they have also not played good cricket. So, I mean, there's a very fine line and fine balance. It's a good point, mate, because you don't get a guarantee of close games even between the best countries. Yes. Yeah, I mean, and okay, the obvious thing is India in this tournament. As I say, possible tournament favourites before the whole thing starts. They've lost 2 games very badly. So you don't get a guarantee of close games, great results, great contests, even from the best nations. So I think you're right, you've got to be understanding of how to develop the upcoming nations, understanding that there will be ups and downs. Even the major nations, West Indies, who were unbeatable in the 80s, are looking vulnerable in this tournament. England, Australia, India, New Zealand, everyone has their ups and downs. Pakistan, we've seen Test Championship, and why can't we have like ODI League? Okay,
4 years, World Cup to World Cup, and then a T20 league, Division 1, 2, 3, 4. So give them the opportunity for 2 years to progress, prove your worth, because these qualifications can be very risky and can be very mismatched groups, which we see in this World Cup. In one group there are like 2 associates, the other group there is no associates. So I think if you give opportunity to nation, okay, here we go, you got 2 years to prove your worth, where you stand. So I think that's a better idea than having a small opportunities. Even a bigger, a stronger team can have 2 bad games and rule it out. I mean, there are already structures in place, aren't there, just to allow for instance, Papua New Guinea playing in this qualifying tournament prior to the Super 12s. To be honest, I had no idea they played there, up until the fact that I saw their name in the schedule. So I mean, there are these games going on around and these leagues going on around, and the game is spreading, which is good. The game is spreading, but what we need at the top is quality at the top and interest, isn't it? We need the interest, and we want people to buy into it. Of course, and I think Rashid Bhai wants to make a point, and then we can go. ये हमने इवेंट देखा ICC का, और हम इससे प्रीवियस इवेंट भी हमने देखे हैं. अगर बैलेंस देखा जाए, IPL ग्रो कर रहा है, IPL की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है. ICC का मैंने बताया कि 8 years जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्स के साथ या किसी के पास 2.6 बिलियन का है, 8 years. IPL का है 5 years का है, 2.8 बिलियन का है. ठीक है, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज बढ़ा रहे हैं. ये देखिएगा, ये क्रिकेट गई डाउन ICC का ये इवेंट, और IPL होगी 2 फ्रेंचाइज हो रहे हैं. 7,000 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है और 5,600 करोड़ की दूसरी है. उनकी मार्केट ऊपर जा रही है बहुत ज्यादा. और ये कितने नेट जो टीवी राइट्स है या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो कितने में IPL के जाएंगे, ये नोट करना है. तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं IPL को ग्रोथ करने की, और अपनी आप खत्म कर रहे हैं. आपके पास एसोसिएट मेंबर्स के कितने प्लेयर्स हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं. मैं देखिए टीवी ऑन करूंगा तो मैं फुटबॉल की मिसाल हमेशा देता हूँ. मैं देखना चाहूंगा, मैसी को देखना चाहूंगा, मैं किसी और को देखना चाहूंगा, मैं अननोन प्लेयर को देखना नहीं चाहूंगा. टीवी पे मैच UAE के भी आ रहे होते हैं, सऊदी अरब के भी फुटबॉल के मैच आ रहे होते हैं, आप स्विच कर देते हो. आप कोशिश करते हो मिलान और इंटर मिलान के मैच देखना चाहते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट या फुटबॉल देखना चाहते हो. तो हम इसको ICC को ये चाहिए कि इसको डबल लीग जो आखिर ने बात की उस तरह से हो, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, IPL और बिग बैश और PSL हो, ये सिंगल लीग पे होनी चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए इनका. लेकिन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, 4 साल के बाद 2 IPL और आएंगी, 1 PSL और आएगी, 2 IPL और आएंगी, तो वो ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी कि आपकी ICC क्रिकेट खत्म होती हुई नजर आ रही है. टेस्ट क्रिकेट के वेस्ट इंडीज के प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर, वहाब रियाज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर, तो क्या है सब T20 में जा रहे हैं. तो गलत पॉलिसीज है जिसमें ICC में काफी लोग हमारे और इंडियन मौजूद हैं जो ICC के डिसीजन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट नीचे जा रही है. इसको देखना जरूरी है, वरना ये इवेंट कोई भी नहीं देखेगा ICC के, सब IPL और PSL देखने बैठेंगे. What is the best foundation for cricket? Test cricket. Why would it? Tariq, can we come back, because we're keen to have a break, and I don't want to stop you. I want to continue that point. Can we When you finish. when we come back, because ICC requires television and the right venues to earn its money, and we do the same. We'll take a short break, be right back with you with Sabine and Richards. Game on, hey. सेमीफाइनल खेलते हैं ईच ऑफ द ग्राउंड. पाकिस्तान को बॉलिंग में तो डेफिनेटली सोचना ये पड़ेगा कि हम हमारे जो लेट ऑर्डर के बॉलर्स हैं जो पिछले हाफ में बॉल करेंगे आखिरी 10 ओवरों में, उनको ज़्यादा प्रेपरेशन करनी पड़ेगी कि जस्ट खुदा न खासा अगर हम टॉस हारते हैं और हमारे ड्यू में अगर बॉलिंग आ जाती है तो दैट नीड्स टू बी फिक्स, दैट प्रैक्टिस नीड्स टू बी डन. कल भी देखा कि हिट मारना बड़ा आसान था क्योंकि बॉल स्किड करता है, बल्ले में आता है तो इजी बिकम्स इजी. तो इसमें वहाब सॉरी विकी टू कट यू, आई विल आस्क यू एज वेल फर्स्ट. इस जब बॉल गीला हो जाए थोड़ा सा, जैसे कल देखा हमने हुआ, उसमें वेरिएशन आर एज यूजफुल और नॉट, बिकॉज बॉल स्किड करता है ना, टर्न स्पिन नहीं करता, मुश्किल हो जाता है. इट इज वेरी हार्ड. तो ऑड बुरा बॉल गिरता ही गिरता है. कल शादाब का भी देखा कि
एक दो फुल टॉस भी हुए, तो वो वन कैन अंडरस्टैंड है। लेकिन इसमें फिर क्या आ जाता है कि एक तो प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले 5 दिन जो हमें अब ऑफ मिले हैं, आई थिंक गीले बॉल से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर उसमें फील्डिंग का रोल बड़ा आ जाता है, तो फील्ड पोजीशंस का बड़ा रोल आ जाता है कि आप एक साइड पे आ जाएं। ओके, अगर आपने ऑफ साइड पे बॉलिंग करनी है तो फिर ऑफ साइड की फील्ड जो है वो पर्टिकुलरली वो स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड देन यू ट्राई योर बेस्ट। दैट्स ऑल। नाउ दिस क्वेश्चन टू यू, जैसे वकार ने बात की कि जब बॉल गीला हो रहा है तो फील्ड एक साइड कर देनी चाहिए। अगर एक साइड फील्ड करनी हो तो क्या आइडियल फील्ड होनी चाहिए आखिरी से 6 ओवरों में या 5 ओवरों में? देखिए वसीम भाई, डिपेंड करता है कि कौन सा बैट्समैन है, वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और आप लोग कैसे प्लान करें। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवेल इज बैटिंग, तो फिर प्रॉब्लली देखिए मैक्सवेल इज बैटिंग, आई वुड से कि क्योंकि वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, ही प्लेज एवरीवेयर, रिवर्स स्वीप भी मार देता है फास्ट बॉलर्स को, पैडल स्वीप भी कर देता है। सो यू नो फॉर अ प्लेयर लाइक हिम, कीप थिंग्स सिंपल, लेट हिम टेक द चांस instead of we take a chance, let him take a chance, and I think it's better to Maxwell to bowl more straighter to him, not outside of stump. not outside of stump. So इसके लिए फील्ड का रखिएगा। उसके लिए for him I will always have that mid off up. Mid off up. Mid off up. I will have mid off up and I'll have 5 leg up, and what I will try to do is that I'm gonna go hard legs, क्योंकि बॉल गीला है, बॉल स्किड करेगा। मैं 145, 147, 148 जिस तरह हमारे बॉलर्स मिड विकेट रखेगा। I'll keep that mid wicket. And square leg. And square leg. Square leg behind leg umpire or in front? थोड़ा सा behind leg. थोड़ा सा behind. और I'll keep bowling him quick hard lengths. I would love him to take chance. Okay. Instead कि मैं एक जगह पे करूँ, बैट्समैन को पता हो कि मैं मैक्सवेल जैसे बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं predictable हो गया हूँ. So you know he can maneuver around और वो he can play shots through the line. क्योंकि ये जो फील्डिंग जिसकी एक साइड पैक जब हम बात करते हैं एक साइड पैक की, हम वो तब भी ज़्यादा वो काम आती है जब आपकी यॉर्कर्स बहुत अच्छे लग रहे हो। आउटसाइड ऑफ स्टंप आप यॉर्कर्स कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर्स कर रहे हैं, तो फिर बैट्समैन के पास चांस नहीं है कि वो बॉल के नीचे आके इस तरफ शॉट मार सके। व्हेन यू आर बॉलिंग लेंथ्स और अब वो गीला बॉल है और इवन कि आपका स्लो वन भी जो है वो स्किड करेगा, सो यू नो देयर आर मच मोर चांसेस कि वो आपको नीचे से पिकअप शॉट लग सकती है। Hence the fine leg back. Hence the fine leg. Okay. और इट डिपेंड्स, ग्राउंड का भी फर्क मेरे ख्याल में पड़ता है, पिच का भी। बिल्कुल, ग्राउंड और पिच का भी। बट क्योंकि हमने देखा है कि अच्छा बाउंस रात के वक्त स्पेशली दोनों विकेट्स पे, स्पेशली जब हम बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं जितनी भी टीमों ने किया है, तो बॉल बल्ले पे ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से आता है। Okay. तो वह जब बॉल अच्छे तरीके से बल्ले पे आता है तो शॉट्स ईजी लेते हैं। सो हमने देखा कि स्लोअर वन ज़्यादा ग्रिप नहीं कर पा रहा। Yeah. सो दैट्स आई वुड से, क्योंकि हमारे बॉलर्स की स्ट्रेंथ है कि वो तेज बॉलिंग कर रहे हैं, वो विद इन द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे हैं, और स्लोअर वन कैन बी यूजफुल बट एट टाइम्स बट यू लेट द गाय कीप गेसिंग। जैसा शारजा की विकेट था, आपने देखा हम बॉल आगे नहीं कर सकते। जबीना ने जो लास्ट बॉल बटलर को किया, लास्ट ओवर जो बटलर को किया, उसमें ही केप्ट, इवन ही वाज बैटिंग ऑन 80+, बट ही वाजंट एबल टू कनेक्ट बिकॉज ही वाजंट श्योर कि बॉल किधर करेगा, फील्ड ऐसी सेटअप थी। Okay. So, it's my question to you, our danger man, guys, Asif Ali, hero now, the way he batted into 2 games. अगर उसके खिलाफ टीमें प्लान करती हैं आसिफ के बगैर, फाइन लेग ऊपर, ठीक है, वो ये शॉट भी वैसे खेलता है, अगर ऑफ स्टंप के वो थर्ड मैन भी ऊपर, वो पॉइंट अंदर करके पीछे पर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, एक वो जो आपका आ जाएगा फील्डर, पॉइंट पे सिंगल वन वाला, एंड देन एक्स्ट्रा कवर थोड़ी बाहर, मिड ऑफ पीछे। नॉर्मली ये बॉलिंग और स्लो बॉलर ये अभी तक जो प्रिटोरियस नॉर्मली ये बॉल कर रहा है इस फील्ड के साथ, एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। जितनी भी टीमों के साथ उसने डेथ में आके बॉलिंग की है, हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये ऐसा बॉलर है शारजा में भी कि जिसको टारगेट कर सकती है टीमें, बट उसने 15 ओवर के बाद ही आ रहा है मोस्टली, और क्रूशियल ओवर कर रहा है एंड के 2 या 3 ओवर वो एंड पे करता है, एंड व्हाट ही इज डूइंग, चौथी 5वीं स्टंप पे वो स्लो वंस कर रहा है, चौथी 5वीं स्टंप पे ही जाके यॉर्कर्स कर रहा है, एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। सो आसिफ गो के इस तरफ भी अच्छा खेलता है, उस साइड पे एक्स्ट्रा कवर पे भी शॉट है मारता है, मिड ऑफ के ऊपर से मारता है, अगर उसको थोड़ी सी पेस आप दें तो पॉइंट के ऊपर से भी मारता है। सो दैट्स गुड फॉर हिम। थोड़ा सा वो जो उसके पास ये चीज़ भी है कि वो डीप चला जाता है क्रीज में, चौथी 5वीं स्टंप पे चला जाता है कि मेरी बॉल जो है मेरे जोन में आ जाए, ताकि मैं उसको, अगर मुझे वाइड भी कोई करता है तो मैं बजाय यहाँ से उसको पॉइंट की तरफ खेले हुए जाए, एटलीस्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ को टारगेट कर सकूँ। और अगर मुझे कोई फॉलो करता है
तो मैं उसको मिड विकेट या सामने मार सकूं. सो आई थिंक ऑब्वियसली टीमें सॉरी काम कर रही होंगी, बट एट द सेम टाइम ज़ाहिर है बैट्समैन भी सोचता है कि ये चीज़ मेरे पे अटैक होना है इस पे, तो आई हैव टू जस्ट बी अहेड ऑफ वन स्टेप अहेड ऑफ द टीम्स. ऑब्वियसली अच्छी टीमों के खिलाफ टेस्ट होंगे, बट मेन चीज़ ये कि ही इज़ कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट, सो ही इज़ इन अ गुड टच. ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके जो नीचे बैट्समैन खेलते हैं, ताकि थोड़े बॉल मिलते हैं आप बाहर से कॉन्फिडेंट जाएं, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको कैच करें. इसमें एक और चीज़ है आसिफ के लिए स्पेशली, या बैट्समैन लाइक आसिफ या बैट्समैन लाइक मैक्सवेल हम बात कर सकते हैं जो बिग हिटर ऑफ द बॉल है. होता क्या है कि जब जैसे ये क्रीज पे आते हैं तो ऑब्वियसली उनका एक एडिशनल प्रेशर तो होता है फील्डिंग साइड पर, बॉलर पे होता है. तो वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करें और इनको विकेट्स में बॉलिंग करें ताकि इनके हाथ ना खुलें, बिकॉज ओवर कम होते हैं. बट मोस्टली होना ये चाहिए कि अगर कोई अटैकिंग बैट्समैन आया है, बिलफर्ज आसिफ है, बिलफर्ज मैक्सवेल है, सो यू शुड कम एंड बॉल हिम राइट अप, ट्राई टू ब्रिंग दैट बॉल इनटू हिम. सिचुएशन में स्विंग कम ही होता है, सिचुएशन में स्विंग ना भी हो, बट इफ यू हैव पेस वसीम भाई आपको थोड़ा सा बॉल आगे फेंकना है. उसमें ये है कि आते साथ सीधा शॉट मारना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए. ओके 2-3 बॉलें वो जरूर लेता है कि यार ठीक है मैं थोड़ा सा आसान हूँ, लेकिन जैसे ही आके आप लेंथ में मारते हैं, विद इन द स्टंप्स मारते हैं, गेम करते हैं उसको एक स्पेसिफिक जगह पे जिधर वो बैकफुट पे ना जा सके, सो ही हैज टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट. तो उसमें वो देखेंगे कि आप मोस्टली वो ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज एज अ बैट्समैन वो भी यही समझ रहे होते हैं कि बॉल थोड़ा सा पीछे होगा तो वो थोड़ा सा उसके लिए डालता है. अचानक बॉल आगे आता है, वो स्किड हो जाता है और एकदम वो पैडों की तरफ गेंद लग जाता है, तो चांसेस है कि वो LBW या कॉर्ड बैंड हो जाए. इस तरह हमने मैक्सवेल को 2-3 दफा आउट किया हुआ है डोमेस्टिक में, आसिफ को भी हमने इस तरह हमारे व्यूज को आप ये भी बता दें, सॉरी टू कट यू, No, go ahead. I will. या व्यूज को ये बता दें कि ये बैट्समैन जब आता है 14वें 15वें ओवर में 16वें ओवर में वो 1-2 बॉलिंग लेता है, तो उसकी रीजन क्या है? पेस चेक करता है क्या जनरली, जस्ट टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स. ऑब्वियसली आप बाहर से आ रहे हैं, आपको जितना भी पिच का आइडिया हो, आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मुझे पेस का आइडिया हो जाए, थोड़ा सा बाउंस का आइडिया हो जाए, और फिर मुझे एटलीस्ट अगर पता भी है कि एक बॉलर 145 पे बॉल कर रहा है तो मैंने थोड़ी सी उसकी फील लेनी है. हो सकता है मेरी टाइमिंग आते ही मैं उसको टाइम ना कर पाऊँ बॉल को, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा तेज़ आ रहा हो, थोड़ा सा स्लो आ रहा हो, तो आप फील लेते हैं. और उसमें भी मेरे ख्याल में जो अच्छे बैट्समैन हैं उनकी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी पोजीशन बनाऊं, जैसे बाबर है, और अगर मुझे बॉल मिलता है तो जस्ट टाइम है. ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं, हमारी ये गलती होती है कई दफ़ा बैट्समैन हम करते हैं कि बिल्कुल ही उस जोन में होता है बस सिंगल ही लेना है. तो बेसिकली होता है क्या है, जब आपके माइंड में ये आ जाए कि मैंने 1-2 बॉल देख के खेलना है बॉल, क्या आप पूरा ऐसे तैयार हो, हाथों से अगलों को प्रॉपर आपको एक वो देनी पड़ेगी डेमो इसको समझाने के लिए. यानी जो जिस तरह बाबर खेलता है, जो जिस तरह विराट कोहली है, वो उनका मकसद ये होता है कि आपने अच्छी पोजीशन बनानी है, पहले से नहीं सोच रहा कि मैंने सिंगल करनी. उसमें सिर्फ फर्क क्या है कि अगर सिंगल के लिए बंदा खड़ा होता है तो आपकी अच्छी पोजीशन नहीं बनती, आप थोड़ा सा लेट होते हैं, बैट पूरा ये बैक लेफ्ट ऊपर नहीं जाती, तैयार नहीं होते, फिर अगर आपको बॉल मिलता भी है तो उसको आप कैच नहीं कर सकते. ठीक है जी, मैं बड़ी शॉट नहीं मार रही, बट मुझे ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरे जोन में बॉल आएगा, अच्छी पोजीशन बनाएं, सोचें कि जोन में आ गया, अगर मुझे ड्राइव तो बॉल मैंने उस पर तैयार होना है. देन अगर बॉल वहाँ नहीं है तो फिर डिसाइड करेंगे अच्छा सॉफ्ट हैंड से खेल के मैंने सिंगल ले ली. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी बैट्समैन के लिए. आई थिंक आप ऑल आउट नहीं जाते स्टार्ट में, कोशिश ऐसी एरियल शॉट मारने नहीं जाते पहले 1-2 बॉलों पे. अगर बिल्कुल ही 4 गेंद रहते हो या 1 ओवर है तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं. एक चीज़ इस टूर्नामेंट में देखी है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि हार्ड लेंथ बॉल करें और बैट्समैन को टाइम ना मिले, वो ये है कि इस टूर्नामेंट में कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए. अब कल का एक देखा है या एक आधा अफगानिस्तान ने मैच खेला है, बाकी सारे दे बॉलिंग अराउंड 150 160 भी नहीं हुआ, 150 और किस में, क्योंकि अबू धाबी में एवरेज स्कोर इन दिस टूर्नामेंट हैज बीन 130. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जी इतने रन्स नहीं हुए हैं. तो इसलिए बॉलर्स जो है ना, व्हाट दे सर्चिंग इज विकेट्स ऑल द टाइम, बिकॉज अगर विकेट्स मिलेंगे
तो आप मैच में हो, वरना मैच से बाहर हो जाते हो। जब अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाता है या आगे इंशाल्लाह जब मूव करते हैं, तो आपने अगर हाई स्कोरिंग मैच रन किए हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आप एक साइड पे फील्ड करें। उसमें ये है कि हमने एक दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी ये किया था कि जब आप 180 190 करते हैं, तो फिर आप उनकी जो रन रेट है ना, उसको बढ़ाना है ना बेसिकली। या विकेटों की नहीं जरूरत, आपने ये करना है कि अगर 8 की उनको चाहिए, टेक इट टू 10 11 12। तो उसके लिए एक फील्ड सेट की थी कि जी थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, वो भी अंदर थोड़ा सा, और हाँ, और एक एक्स्ट्रा कवर, और मिडॉन भी ऊपर बुला लिए थे। तो उसमें ये था कि ओके वाइड यॉर्कर्स लाइन पे, जो वाइड की लाइन है, कोशिश करो कि उसके अंदर बॉल किया जाए। अगर उससे बाहर भी ऑड वन हो जाता है वाइड बॉल, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वहां रखेंगे तो वहां पे इस तरफ खींचना इट्स नॉट इजी। लेकिन ये है कि फिर यहाँ पे जो भी शॉट लगता है, इधर गो थर्ड मैन, दैट वन और दैट वन, उधर भी मारना मुश्किल होता है अनलेस यू बॉल अ रियली बैड बॉल। सो आई फील कि अगर स्कोर आपके पॉकेट में है, देन यू नीड टू ब्रिंग दैट टैक्टिक्स। अदरवाइज जो विकेटों के बीच वाला है, early on to the new batsman, I think is very crucial. It is absolutely. With that, it's time for a break in the pavilion. We'll be right back. Keep watching Sports and 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. जुबली इंश्योरेंस के एजुकेशन प्लान्स में आपके लिए है हर मुमकिन सहूलत, जरूरत के मुताबिक प्लान्स। Trolley speaker, audio in and out, NH 808, Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wireless mic and speaker stand. Trolley speaker, NH 8+, Bluetooth, repeat, delay and echo effects, 8 hours battery backup, HD wired mic. Trolley speaker, Audionic, the sound master. Pakistan's creamy state, so creamy, so dreamy. Hila Fresher, now new and fresher. And here's my 100. 500 रुपए का फ्री वाउचर, इजी पैसा ऐप साइन अप करके। So go on, score 100 now. सिर्फ Zone 4G पर है गूगल मैप्स बिल्कुल फ्री। अब ट्रैफिक को क्लीन रोल करें और घर जल्दी पहुंचकर मैच देखें। Let's get digital with Zone 4G. गोल्डन वर्ल्ड ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक देता है कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान महाना एक साथ के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन बुनियाद से तकमील तक। गोल्डन ब्यूटी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर फ्री स्किन केयर, बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। أتقولون على الله ما لا تعلمون. متفق عليه. وفي رواية: بينما كلب يطيف نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. जानवरों की इम्पोर्टेड अद्वियां भी दस्तयाब। बैठी बैठी बूढ़ी ना हो जाए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बाकी रहा। Welcome back to Game on Hay. Now, so far today we've been using the studio as a discussion forum for the merits or otherwise of World T20 competitions and world cricket in general. We've actually had, I think, a very, very good discussion, very open discussion so far. We left you
as ever, as we like to do on this show, on a bit of a cliffhanger at the end of the last segment, because Sir Viv, the great man that is Sir Vivian Richards, had a point he wanted to make, and yet we cut you off in your prime. So the stage, sir, is now yours. Thank you so much, David. David. Mr. Gary. Oh, okay. Oh, no. I'll leave that for another time. You had a point? What I'm trying to say is, to express the fact that we are making, or the ICC and the folks, the governing body of the game in itself is trying to make this thing too easy for guys who to come and just play T20 cricket. There's a foundation of the game in itself, which would have helped to have given us the ODIs, also given us the T20, which is a fantastic format. We can never forget that. The things why I believe maybe we're losing so many players to the game in itself and countries is the fact that we make it too easy for guys to do that. If we govern a little bit better, and I think that there should be a two-tier system in a sense where in order for you to get the big bucks, the T20 bucks and all that stuff with the franchises around the world, you got to start with the game on a whole, which would have given you an opportunity for us to have all these various formats. It is not happening, and this is why we see such mass exodus of individuals not wanting to play for their countries, but wanting to jump the hurdle and get to the next point. And I just believe that the governing body can do a little bit more, in my opinion, in order for you to, some of the guys who just start T20 cricket, they will come and be in at some point, they can hardly play forward defense because they do not know the rules and the real rigors of test match cricket. And when you know that, to me, you become an all-rounder for you to do the necessary things. You can earn all the bucks in the world, but you got to start somewhere. Okay, but we all start somewhere, and we start at school, at club, depending on the country you are brought up in. You have a first-class system of sorts, you have to work your way through. And then when you get to that stage, I mean, I'm not quite sure what ICC can do to say, to a young Viv Richards, say you're 19 years old, playing in Antigua, coming to West Indies side, maybe to play Test cricket, maybe you are a Karan Pollard who is a specialist in short-form games. And at that stage, are you going to deny Karan Pollard the chance to earn a living? Because he hasn't passed the exam which says, here's my forward defensive. No, let's not talk about the living. We've been talking about the things that you should go through because of, if you have a proper system in place, we won't have these particular individuals jumping the hurdle and trying to get to the next point. To me, that's too quick in my opinion. You have to have an understanding of the game, and when you do that, it creates a much better avenue for players wanting to represent their countries. And when you do that, then you have other opportunities in order for you to... Okay, I'm going to ask you a quick question because we need to move on and discuss today's game. Quick question, which is this. In order to have those opportunities, and okay, I'm going to use the West Indies as an example, where universe boss Chris Gale has played over the years, he's played Test matches, he's made 300s, he's made triple hundreds in Test cricket. He's opted to play franchise cricket a lot because that's his way of making a living. And one of the reasons he's done that is because the West Indies does not have the money to pay him to play Test cricket. Is that true or is that false? I think that could be correct. So, what are you asking? You're asking ICC to give the West Indies enough money to incentivise Chris Gale to play more often for his country, or is it down to West Indies? When I say when I use the term, there's a two-tier system. I think monies that are given by the ICC to develop the various countries should be quite equal on an equal basis, because if we're looking to improve the game, we need to have a balance. Okay, right, so let's leave it there now. This is a deep and complicated issue, which would take more serious minds than mine, maybe, to unearth all the hidden meanings in this game. But let's start with the fact we love the game. Let's start with the fact now that we have a couple of games today in this World T20 as it stands, in the format that it's in, and we want the excitement to continue. And we're going to look at the game between India and Afghanistan, which of course is a serious game, because India, first of all, need to get some points. Afghanistan are a potential threat. And India have underperformed. I mean, there is one thing there's no doubt about, is that India have seriously underperformed in this tournament. They need to get an act together today. Of course, I mean, they have not come in with the intensity, whether it was their batting, their fielding or their bowling. They have not
looked good in any three departments till now in these two matches. And the biggest contrast now in this game would be Virat Kohli saying that the team did not show any courage, and then they are facing the Afghanistan team, who is nothing but courage. Indeed. So yeah. Well, I'll leave you to discuss for the left wing the merits, the people who are important. Virat Kohli is the leader, is one of their batsmen who has at least made some runs, and see what there is in the offing for today. राशिद भाई, अभी तक विराट कोहली की एक इनिंग्स हुई है 50 रन की, वो भी उनको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं हुआ जैसे T20 का वो रखना चाहते। क्या समझते हैं जो बैटिंग ऑर्डर इन्होंने लास्ट टाइम बदला, वो उसको वापस अब लाएंगे, दोबारा से चेंज करेंगे? देखिए, इनकी वैसे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो फेवरेट्स में थी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको अपने फेवरेट का, लेकिन जिस तरह से मैचेस हारे हैं तो लास्ट मैच जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड आ रहे हैं ये लोग, उसमें क्या है कि अपने मेन जो प्लेयर है वो है रोहित शर्मा, उसको आप नंबर 3 पे लेके आ गए, वहीं पे आप मैच, और ये विराट कोहली नंबर 4 पे आ गए। तो इस टीम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन उन्होंने वैसे ही दबा दिया था, मैच से पहले ही हार चुके थे ये लोग। टीम सिलेक्शन, ईशान किशन ओपन चले गए और ऋषभ पंत नंबर 5 पे आए हैं। विराट कोहली ने बहुत ही देखिए, अभी तो मैचेस जीते हैं तो जितनी भी तारीफ की जाएगी वो ऐसा लगेगा कि मैचेस जीते हुए हैं तो जी ये सारी तारीफें हो रही हैं। लेकिन आई नोटिस्ड, मैं लास्ट टाइम जब बांग्लादेश की सीरीज खेला था और उसमें और अब में जो बाबर आजम में डिफरेंस है वो ये है कि ही हैज मैच्योर्ड। जो बांग्लादेश की सीरीज थी और अब तक एक उस ग्रुप का और एक ग्रुप का अभी देखा जाए तो अगर इंडिया क्वालिफाई करता है, न्यूजीलैंड क्वालिफाई करता है या अफगानिस्तान क्वालिफाई करता है तो दे माइट हैव टू गो एंड प्ले, except India, the other teams might have to go and play. And there is the ambiguity. Except India, everybody goes. देखिए, बात ये कि India is the host, so they have the right. Okay, fair enough. I agree कि India host है, but these are different times. Just make it a little simpler. Yeah, that's what I'm thinking. A1 to A2, whatever it is, crisscross. ये venue यहाँ है, ये venue यहाँ है. I mean, Dubai, Abu Dhabi में there is not much difference in a way. Tickets तो semi-final और final की वैसे भी I think sold out हो ही गई होंगी। मोस्टली हो गई है, सोल्ड आउट हो गई है। 5 हैं। मुझे 2 है रॉयल बॉक्स। हाँ, मुझे 2। मैं रॉयल के नीचे बैठ जाऊंगा। नो वरी बॉयज, मुझे देनी वी हैव लेफ्ट इट ऑन यू बाबा। मुझे देनी थी ना 10, वो इन सबको जो है ना बराबर तकसीम करना होगा। बहुत अच्छे। और किसी की ख्वाहिश रह रही है वो, अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि आपको टिकट चाहिए तो वहाँ आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे और आप इनसे टिकट मांग सकते हैं उनके पास। मैंने बहुत कुछ सीखा है। With that, let's move on to the games that we have today. पहला मैच जो है वो हमारा आज न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड का है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उसका टॉस और पिच रिपोर्ट हमारे पास आएगी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इंडियन फैक्टर व्हिच इज इंडिया वर्सेस। कौन से निकाले हुए हैं, फिर कोई और मैच कर देता है हमेशा। We asked him in the beginning. व्यूअर्स को बताते चले कि हम शो जब शुरू होता है उससे पहले बड़ी कोशिश करते हैं कि फखर बता दे कि किस मैच की बात करनी है, पहले करनी है, बाद में करनी है। सरकार भाई, आपकी थ्योरी है कि बड़े टूर्नामेंट्स में सरप्राइज पैकेज होना चाहिए। हमारे को अगर आप देखें तो कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जीते, ठीक है, कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड में जीते, तो इस तरह के पेपर्स जब तक ये एक जगह एक बंदा तैयार होकर आया, हमारा नौजवान तैयार होकर आया, तैयार होकर आया। चलिए आपसे शुरू करते हैं, since you're the only one who seems to have done his homework. We've got India versus Afghanistan, both of them eyeing that semi-final spot. Afghanistan in a much better position, India struggling. No doubt that India is struggling because India has played against Pakistan and New Zealand, और Afghanistan has already played against Pakistan. So the result was कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया है, right, और इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड और जो टॉप टीम है पाकिस्तान उससे हारी है। So it is going to be a good match, but still we have nothing on Mujib. मुजीब उनका स्ट्राइक बॉलर है, नया बॉल बहुत अच्छा करता है। नबी को हमने देखा है कि नया बॉल वो कर रहा है लेकिन उस स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसको रन हो रहे नए बॉल पे, पाकिस्तान के खिलाफ भी हुए और इवन के जो लास्ट मैच उसने खेला है उसमें भी उसको जो है वो रन हुए हैं।
सो प्रॉबली ये देखना पड़ेगा कि मुजीब कितना फिट है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो टीम में है दैट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. टॉकिंग अबाउट देयर फास्ट बॉलिंग, वी नो कि वहाँ पे नवीन उल हक है, वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं. उसके अलावा हामिद ने लास्ट मैच में बॉलिंग अच्छी की है, प्लस गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग की है. पर ये देखना पड़ेगा कि अटैक इंडियन प्लेयर्स को अटैक कौन करेगा, नया बॉल कौन करेगा, वेदर नबी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास राइट हैंडर्स है. ईशान किशान अगर आज खेलते हैं तो उसके लिए नबी कर तो सकते हैं नया बॉल, बट there are going to be at least 3 overs which has to be bowled by the fast bowlers, if not Mujib. So that is a question mark on Afghanistan bowling, because India will play. विकेट हमें पता है कल यूज हुआ था, आज बेहतर तरीके से खेलेगा. They will have that good batting under the light. It might swing a bit, but Indian batsmen are too strong to handle that, because it will be a belt off a wicket. Because इनके medium paces हैं. You finish first. मैं एक ये कहने लगा था कि अब हमें समझ में आया कि ये फ्रेश क्यों नहीं आता सुबह, क्योंकि ये सारी रात पढ़ाई करता रहता है. एक तो ये इस बात को क्रेडिट देना चाहिए हमें. I can bet my house on it. मैं नहीं पढ़ता हूँ ना. अच्छा ठीक है. दूसरी दोनों आप ये दोनों जो बोल रहे हैं इनके, एक ने हामिद आपने बात किया 3 आउट किए, 9 रन लेके पिछले मैच में, फिर नवीद ने 3 और फिर गुलबदीन ने 2, मगर ये सारे एक ही पेस के हैं. Exactly 130, 125. बिल्कुल एग्जैक्टली. और हमने ये देखा कि जो हमीद भी जब कल आए उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली जब बॉलिंग अगेंस्ट ये स्कॉटलैंड, सो उसमें फर्क. अगर मुजीब फिट होता है तो वापस आ जाएगा, तो आप अगर देखें तो स्पिन और फास्ट अटैक दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जी. So yeah, they've discussed Virat Kohli's batting, which no one can say anything about. Of course, he's a top batter, but it's about the leadership and how MS Dhoni and Rohit Sharma has been, they think, more shrewd leaders, and especially in this format. Okay. Well, let's take that across. Basically, there have been something like 2 batting performances. वंस पे ज्यादा रिलाई कर रहा है, और हमने देखा नए बॉल पे भी वो स्लो. Captaincy, because it is going to be a guy. He's a passionate man. He leads with vigour, with verve, but that doesn't always necessarily make you the best man to lead a team, and that's an open discussion. He has that carrom ball, he has that flipper, he bring that ball, knuckle ball से वो बॉल जो अंदर लंबा स्विंग करता है. उसको काफी खेले हुए हैं IPL में as well. देखिए खेले हुए हैं, लेकिन उसी में देखिए प्रेशर है कि एक नया बॉल एक आता अटैकिंग बॉल बॉलिंग कर रहा है, और देन सडन इंडिया पे है. So he will obviously, once he will be part of the team, India will feel that pressure, because and with all the criticism that they've been getting at home and around the world of such, if they have any pride in their performances, I believe that they're going to come to the party today and just basically nullify all that nonsense that we've spoken about them. It's a good enough team. Doesn't look. तो फिर वो शुरू के ओवर्स अच्छे होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरू में इंडिया ने इनके बॉलर्स को अटैक कर दिया, so that means Rashid has to come before 10 overs. And if they will come before 10 overs. देख लेते हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स के. ये कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. इस वर्ल्ड कप के हैं जी. देखें, राशिद ने 3 मैचों में 7 आउट किए, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखने की हैं, विकेट्स तो आए हैं, उसके साथ में इकॉनमी रेट मुजीबुर रहमान का देखें 4.25 है. Naveed is looking good as well, under 7, and so is Hamid. He's got 2. He only played 1 game, so 2.25. So overall, apart from Nabi, you're right, Nabi got hammered in this T20 World Cup. And look at his economy rate, 9.14. But overall, इनके जो 2 स्पिनर्स की ये बात कर रहे हैं, राशिद की और मुजीब की, I mean, they are the key. Mujib has to get fit against India today. Yeah. और another चीज़ का, going to Indian bowling, उनकी बॉलिंग एवरेज इस वर्ल्ड कप में 130 की है. बिल्कुल इंडियन बॉलिंग भी लगा रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने 2 ही विकेट लिए. हम ये देखें इस पूरे कंपटीशन में अभी तक they haven't bowled first, so that is a massive difference. 126, 130 एक मैच में वो जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, और एक मैच में they have जिसमें पाकिस्तान ने आउट क्लास them. So you know that is a major difference as well. But अगर आप स्टिल देखें, बुमराह 5 की इकॉनमी रेट है, तुम्हारा 8.5, जडेजा इज नॉट इवन, शामी की 7 की एवरेज है, जिसको इतनी ज्यादा बैशिंग की गई है. He has still bowled the best after. He is better than most all the other bowlers. पांड्या ने भी एक मैच खेला. So you know देखें इनका वो चक्रवर्ती का वो नहीं आ रहा. But yeah,
अगर आप ये देखें तो वो एक बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, ही कम्स इन एंड बॉल विद द न्यू बॉल। उसके बाद अगर आप देखें तो बुमराह और शामी दे डिपेंड अ लॉट ऑन हिम, बट क्योंकि स्कोर ऑन द बोर्ड नहीं था, टीम अंडर प्रेशर नहीं आई, बॉलिंग वाज अंडर प्रेशर, आई थिंक बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया न्यूजीलैंड ने उनको लास्ट मैच में। दे फिनिश्ड द गेम इन 14 ओवर्स व्हिच वाज अगेन अनदर गुड अचीवमेंट। सो इट विल आल्सो डिपेंड जब इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करते हैं, हाउ दे विल कम, व्हाट विल बी देयर प्लान्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो इस वक्त जैसे इंडियन टीम जिस मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर से गुजर रही होगी, एंड दे रिलाई टू मच ऑन बुमराह, वो ना करे तो सारी उनकी बॉलिंग गिर जाती है। राइट, सो फार इस वर्ल्ड कप में ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो हमने शुरू में भी बात की कि जो मिडिल ओवर्स में उनके विकेट टेकर्स थे, चाहल था, वो नहीं है, तो वो जो एक आपको अगर बुमराह से आउट नहीं हुए तो विराट कोहली ऑलवेज यूज्ड टू बॉल चाहल, और वो मतलब पहला ओवर भी कर देता था, कभी तीसरा ओवर कर रहे, 5वां छठा 2 ओवर, जी बिल्कुल 2 ओवर वो करता था, और विकेट टेकिंग ऑप्शन थे उनकी इन द मिडल ऑल्सो। वो उनको नहीं मिल रहा। अब बुमराह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जब बाकी विकेट नहीं ले रहे तो आपने देखा होगा ही ट्राइज एवरी बॉल, पहले 2 ओवर पे वो यॉर्कर्स हर बॉल पे वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर आपके एज ए यूनिट आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो और बाकी सारे भी विकेट्स ले रहे हो या वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हो, तो फिर बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप प्रेशर बिल्ड करें और ऑटोमेटिकली अगली टीम प्रेशर में मिस्टेक्स करती है और आउट करते हैं। ये बॉलिंग एवरेजेस देख रहे थे सारी टीमों की इन द सुपर 12 बिकॉज वसीम ब्रॉट दिस अप नाउ, दिस इज हाउ इट इज, द बॉलिंग एवरेजेस पूरी टीमों की। इंग्लैंड बेस्ट, England only 12.34. Look, Afghanistan is right behind them. Amazing. South Africans as well. New Zealand at that graph tell you. So they graph आपको ये बताते हैं कि obviously कि किन की विकेट टेकिंग किन के पास bowlers हैं। एक चीज लेकिन वसीम आप और से देखें, श्रीलंका which is at second last is at 41.73 and then boom there is a big jump to India. You know India ने bowlers से सिर्फ I know I agree with Wahab के टोटल बड़ा कम था उनके पास, 2 विकेट लिए हैं पूरे इंडिया ने, 17 बॉलर इस T20 वर्ल्ड कप में 2 या 2 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। सो दैट्स आल्सो एडेड प्रेशर। दूसरा जो हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, उसी में अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान के पास मीडियम पेसर है, तो अगर हम ये देखें कि डिसेंट पेस वाले इंडिया के पास बुमराह इज 140 प्लस कलेक्शन, शामी इज 140 प्लस। अगर उसके बाद हम ठाकुर को देख रहे हैं जिनको उन्होंने लास्ट मैच खिलाया, या Bhuvneshwar को पाया, they are both 130 bowlers. Okay, let me bring Waqar in for this. Is a very important चीज। आप लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जी इंडिया के पास कोई बड़े टोटल नहीं थे डिफेंड करने को, और उनके बॉलर्स को ये चैलेंजेस थे कि वो दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे थे। दूसरी टीमों ने भी तो दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग की हुई है। They've gotten more wickets. They have a better economy rate. I can understand कि targets are small here, but wickets चले target छोड़ भी दे, ऊपर से 2-3 विकेट तो ले सकते थे ना दोनों गेट्स के अंदर। Is there something lacking there all of a sudden in their approach to this whole thing right now? I think what they're lacking is confidence. Yeah. वो रब करता है from batting to bowling. क्योंकि अगर आप runs नहीं करते and there's been talks कि जी they're tired और IPL और ये और वो, I mean they're all excuses, लेकिन जब आप runs नहीं करते हो तो body language आप वही वाली लेके जाते हो जो आपने बैटिंग में की होती है, and that is clearly showing that. India no doubt 2 बड़े मैच खेला है against Pakistan and New Zealand, so they were team for a hunt. वो ऐसा नहीं बैठी हुई, पाकिस्तान भी जीतने के चक्कर में New Zealand is also one team who are thinking okay we can win this, so they played against those teams. आज I think Afghanistan के against it will be a different ball game from India. India is a far better team. They will come lot stronger. Batting करें या bowling करें, उनको ऊपर yes pressure है. All they need is a little click in the bowling. अगर early wicket लेते हैं, and all they need is एक छोटी partnership to begin with. Twice India and Afghanistan have clashed before in the T20 format in the World Cup. Twice, 2010 में 2017 में, दोनों दफा इंडिया बहुत convincingly जीता. But this is a different Afghanistan team. बिल्कुल, एक तो अफगानिस्तान की टीम डिफरेंट है। हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले जो अफगानिस्तान की बैटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, हम सिर्फ अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप है जो अब तक पहले खेलती है। कि नंबर 9 पे उनके गुलबदीर आते हैं या जन्नत आते हैं जो कि उनके बैट्समैन हैं।
सो उनका जो पूरा अगर बैटिंग देखें, ऊपर से उनके पास 3 बड़े जिसको कहते हैं कि बड़े पॉजिटिव खेलने, एग्रेसिव खेलने वाले बैट्समैन है पहले 3, जिनके स्ट्राइक रेट्स 150 के आसपास है। जज़ई है, उसके बाद एमएस है, उसके बाद गुरबाज है। ये बड़े उन्होंने बड़ा फॉर्मेशन जो अपनी टीम का रखा है। देन इन द मिडिल ओवर्स दे आर वेरी गुड बैट्समैन। उसका जाएगा, अगर बॉल यहाँ पे है तो वो छक्के ही मारेगा आपको, तो क्वालिटी प्लेयर है। वही बात जो मैंने पहले की थी कि जो अगर उनकी बैटिंग देखें, वो क्वालिटी बैटिंग लाइन आता है, उसमें नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन वही है कि अपनी वो बड़े जबरदस्त खेलते हैं। वो जो एक मिडिल में उनका गैप आता था कि मारते मारते वो आउट हो जाते थे एकदम, वो नहीं है। 150 वो लेके चलते हैं। अगर ऊपर से 3 में से एक भी फायर कर जाए तो उनका बड़ा चांस है कि वो 170 या 180 रन कर सकते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ की। और जो बॉलिंग साइड है, जो हमने एवरेजेस देखी है, उसमें आप देखें उन्हीं टीमों की एवरेजेस कम हैं बॉलर्स की जिनके पास सारी बेसिस कवर है। दे हैव बॉलर्स हु टेक विकेट्स इन 1 to 6, 6 से 15 और 15 से 20, यानी जिनके पास अप फ्रंट ऐसे बॉलर हैं जो कि पावर प्ले में डैमेज करते हैं अगली टीम को। इंग्लैंड को भी देखें तो आदिल रशीद इज अ बिग आई थिंक फैक्टर। जब भी वो आता है वो पावर प्ले में आके 2 आउट कर देता है, उसके बाद फिर उसको ऐसी जगह पे लेके आता है, विकेट लेने के लिए लेके आता है और विकेट लेता है। सो इवन मोइन को भी वो विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे यूज कर रहा है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिया इज मिसिंग दैट एट द मोमेंट। वो स्कोर रोकने के लिए आ रहे हैं लेकिन आउट करने के लिए उनको अभी नहीं लग रहा कि कौन सा बॉलर है जिससे हमने चांस लेके आउट करना है अगली टीम के बैट्समैन। बिल्कुल, अगर आप टोटल काम हो ना टू डिफेंड स्पेशली इस फॉर्मेट में, देन नेचुरली बॉलर जो होता है उसकी साइकी थोड़ी सी बदल जाती है। वो कोशिश करता है पहले जैसे बुमराह करता है यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, देन आई थिंक वो आपका मेन बॉलर अगर हिम्मत तो हारने नो द राइट वर्ड, अगर वो विकेट नहीं लेता तो फिर उस पूरी बॉलिंग साइड आपकी गिर जाती है। देखिए उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बुमराह और हमने जो देखा थी वो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, अटैकिंग विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन उन दोनों बॉलर्स को अभी तक वो कंफर्ट जोन नहीं मिला जिसमें वो आके अटैक कर सके। हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने जब स्टार्ट किया इनके अगेंस्ट तो रिजवान ने भुवनेश्वर को शुरू में ही अटैक कर दिया, दे केम अंडर प्रेशर। फिर शामी आए, ही गॉट अंडर प्रेशर। उसके बाद क्या हुआ कि उसको अपने मेन बॉलर लेके आने। जब आप अपने मेन बॉलर को ऐसी सिचुएशन में लेके आते हैं कि जब स्कोर कम होता है तो दे आर कंफ्यूज इनके हम लोग विकेट्स लेने जाएं या हम लोग कंटेन करने जाएं। सो वो बेसिकली जितनी भी अभी हमने बॉलिंग देखी है 2 बॉलर से, क्योंकि जडेजा इज समबडी एल्स वो आल्सो कंटेन, शामी समबडी हु इज अटैकिंग फर्स्ट कंटेन और कंट्रोल देता है निवेश पे। बट 2 अटैकिंग बॉलर जो बुमराह और हम बात कर रहे हैं चक्रवेदी की, दे जस्ट केम इन एंड उन्होंने कोशिश ये की है कि वो ब्रेक्स लगा दे स्कोर पे, विकेट लेने नहीं गए। प्लस आई सपोज सेकंड बॉलिंग में बॉल भी थोड़ा बॉल भी गिरा, सो वी हैव टू गिव दैट एडवांटेज। प्रोबेबली आज के मैच में ये हो सकता है कि वो उनको एज अ विकेट टेकिंग यूज करें, जिस तरह राशिद मिस्ट्री है, हो सकता है उसको एंड में वो यूज करें ताकि व्हेन द अदर टीम इज अटैकिंग यू तब आप देखेंगे कि देन इट माइट मेक अ बिग डिफरेंस। ऑब्वियसली अफगानिस्तान का भी आज सही टेस्ट होगा। एक मैच खेले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनका मुश्किल मैच था, आज उनका टेस्ट होगा। हाँ, वो उनकी कैपेसिटी क्या है। For Afghanistan's Rashid Khan, it's a special game because he's only 1 wicket away from 400 wickets in T20 cricket. 400 विकेट हो जाएंगी, 399 विकेट इस तक उनकी, एक और विकेट हासिल करेंगे तो 400 विकेट हो जाएंगी। He'll be the 4th bowler in the world to be able to do that. इससे पहले इमरान ताहिर, सुनील नारायण और ब्रावो जो है इन्होंने 400 विकेट लिए। So this is going to be a special day for Rashid Khan in Afghanistan, and we are going to take a break. We'll be right back right here in the pavilion on His Sports and 10 Sports. Keep watching. Candyland की chocolate now. Candyland की chocolate now.
जुबली इंश्योरेंस के एजुकेशन प्लान्स में आपके लिए है हर मुमकिन सहूलत, जरूरत के मुताबिक प्लान्स और इजी पॉलिसी मैनेजमेंट। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल। तो हो रोस्ट पाए या पिज्जा विद चीज, खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। सब्ज रंग छा गया, मंजिल तक पहुंचा गया। Now available online. Pakistan Cables, trusted, not to compromise. चिक चिक पख पख चिक चिक पख चिक चिक पख पख चिक चिक पख। बैंक अल्फला पेश करता है सेविंग्स अकाउंट में बेहतरीन मुनाफा जो आपके आज और कल को रखे आजाद। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। चाय चाहिए पॉलिसी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो दें $, पर 7% और पाकिस्तानी रुपए पर 11% तक का मुनाफा। आज ही ले अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन मुस्तकबिल। ओलिविया मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क लोशन मेरी स्किन को रखे हेल्थी, मॉइस्चराइज्ड एंड ब्यूटीफुल। ओलिविया, शुक्रिया। बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ गर्मी हो या पसीना, जो भी आपके बालों को अपनी छड़ी को आओ शाइन। जुबली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, 400 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस ऐप, जिससे कीजिए सब एक क्लिक पे। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल। तो हो रोस्ट पाए या पिज्जा विद चीज, खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। सब्ज रंग छा गया, मंजिल तक पहुंचा गया। Now available online. Pakistan Cables, trusted, not to compromise. दीपक पार्टीज के लिए टाइम नहीं है, और अगर कुछ हैवी खा लिया तो डिनर का सीन ऑफ। हाँ, इस प्रॉब्लम का हल्का फुल्का सोल्यूशन मिल गया। ओलिविया मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क लोशन मेरी स्किन को रखे हेल्थी, मॉइस्चराइज्ड एंड ब्यूटीफुल। ओलिविया, शुक्रिया। चॉकलेट में मार्शमेलो। Introducing Candyland Mellow, thick chocolate में छुपे soft marshmallow का yummy combo. Candyland Mellow. Say hello to Mellow. बाल संभालेंगे चांद से, शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ गर्मी हो या पसीना, जो भी आपके बालों को अपनी छड़ी को आओ शाइन। जुबली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, 400 प्लस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस ऐप, जिससे कीजिए सब एक क्लिक पे। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो दें $, पर 7% और पाकिस्तानी रुपए पर 11% तक का मुनाफा। आज ही ले अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन मुस्तकबिल। Try the new taste. Pepsi. ये है ओलिविया फेयरनेस क्रीम, जिसकी ट्रिपल फेयरनेस थेरेपी स्किन डैमेजेस से बचाए, सिर्फ 10 दिन में फर्क नजर आए। ओलिविया, शुक्रिया। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुशी से नशात of the ICC T20 World Cup. In the pavilion, I'm joined by Pakistani legends and superstars Wasim Akram, Bukhari, Yunus, Misbah Ul-Haq and Wahab Riaz. ब्रेक में आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इंडिया और अफगानिस्तान की मैच की, जो आज दूसरा मैच है अबू धाबी से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होगा। राशिद खान की बात कर रहे थे, जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स का ये स्टैट। दिस इज हाउ इट इज। डीजे ब्रावो, इन्होंने 510 मैचेस खेले हैं और 552 विकेट लिए। T20 overall. T20 overall, just T20 overall. नारायण देव 383 with 425 विकेट्स। इमरान ताहिर ने 334 मैचों में 420 विकेटें ली हैं। राशिद खान ने 287 मैचेस में 399 विकेटें ली हैं। And then there's Shakib Al Hasan with 351 and 398. आपने एक चीज नोट की है सबने कि इस ग्राफ में 4 स्पिनर्स हैं और 1 मीडियम पेसर है। There is no
150 plus. Yeah, that's true though. Wahab is getting close to 400 also. Yes. Yeah, he is. Wahab is He's sitting on 360. 358, 59, and Seventh Amir is on 370 something. Okay, well done, guys. Good. Two lefties. That's really incredible. But Bravo, why? How come Bravo is up there? See? Because he plays every league. उसको मोहल्ले का मैच ही मिल जाए खेल लेता है T20 का भाई. So he's so 500 plus matches. 500 plus matches. Yeah. So he plays in Canada. He plays in CPL, IPL, PSL. Economy थोड़ी सी ज़्यादा है उसमें. He's 8 plus. Yeah. But I guess that's because he bowls right at the death also. Yeah. He bowls those and he's very successful. उसका slow ball ठीक ठाक dip करता है Bravo का. That's something he has mastered over the years. Yeah. Okay, let's get to the Indian batting woes, Misbah. The top order is not firing, or right in the beginning of the tournament, Wahab ने ये बात clear कर दी थी कि any team that can go through, especially पाकिस्तान के, अगर हम उनके top order में एक दफा dent कर दें, तो उसके बाद उनका middle order जो है वो तितर-बितर हो जाता है. And that's been going on. How do the Indian batsmen come out today, thinking this is the Afghanistan side, ये थोड़ी सी वीकर साइड है, हालांकि मैं नहीं बिलीव करता कि इस फॉर्मेट में कोई भी वीकर अफगानिस्तान से कोई नहीं है. बट हाउ डू दे कम आउट? व्हाट वुड बी देयर स्टेट ऑफ माइंड टुडे? आई थिंक बड़ा मुश्किल तो है, चैलेंजिंग है उनके लिए, जिस किस्म की सिचुएशन है, जितना प्रेशर बिल्ड हुआ है और कॉन्फिडेंस लेवल लो है, बट दे कैन. ऑब्वियसली रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितना एक्सपीरियंस उनका है और जिस क्लास के वो बैट्समैन है, दे हैव टू, बिकॉज डू एंड डाई सिचुएशन है उनके लिए. तीनों मैच उन्होंने जीत रहे हैं और आज का मैच स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे जो बड़ी चीज़ है इन कंडीशंस में, यू हैव टू रिस्पेक्ट कंडीशंस, और उनको देखते हुए आपने देखना है कि भाई हमने कैसे निकलना है. यू नीड अ गुड स्टार्ट है. समहाउ आप वो पिचेस नहीं है इंडिया या बाहर वाली पिचेस नहीं है जो आप आराम से जाते हैं और 50 रन लग जाता है बोर्ड पे. यू वेट फॉर द बैड बॉल, इवन गुड बॉल्स को भी आप आराम से कहीं ना कहीं चौके मारते हैं. ये पिचेस जो है ये बड़ा डिफरेंटली आपको खेलना पड़ता है. यू हैव टू पिक द बॉलर, कोई ना कोई लेंथ पिक करनी होती है, कहाँ मैंने अटैक करना है. एट द सेम टाइम आपने कंसोलिडेट भी करना है ऊपर से. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कोई भी शॉट मार दूंगा या मैं खड़ा रहूँगा मुझे रन मिल जाएंगे. आपको कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ करना है. ठीक है, रहना भी है विकेट पे, रन भी करने हैं, बिल्ड अ पार्टनरशिप अपना. मिल रहा है इंडिया को, फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से रन भी नहीं मिल रहा है, पहले 6 ओवर में विकेट भी लूज कर रहे हैं. तो कुदरती अज़ा का 100% ओरिजिनल फॉर्मूला. इससे जोश में जोश है. मरहबा करेंगे ही अपने प्लेइंग के बाल संभालेंगे 4 से शाइन करेंगे. सनसिल्क ब्लैक शाइन 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ गर्मी हो या पसीना, जो भी आपके जाने के बाद MS धोनी के जाने के बाद दे डिपेंड अ लॉट ऑन पांड्या, और पांड्या ने उनको नीचे से काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी जितवाए हैं, और प्लस उसकी बॉलिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी रहा है, बिकॉज व्हेन ही इज बॉलिंग 140 प्लस. लास्ट मैच में हमने उसको ये देखा कि वो आया, उसने 1 ओवर किया है. So most probably we will see him bowling as well, because that gives an additional 6th or 7th bowler to Indian squad as well at the same time. So he will be playing, and I think they should go with the same team. नहीं, सूर्या कुमार यादव अगर फिट होता है, will he come in for Kishan? I don't think so. He is going to come for Ishan Kishan. They might go with Ishan Kishan. Plus today अगर आप ये देखें कि they will come out blazing. They have no pressure left. 2 टीमों से वो हार चुके हैं. They are on a chance of qualifying. अगर आज का मैच वो जीते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीते तो रन रेट पे. सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल कम अटैकिंग. द वे दे प्ले, दे आर दे आर नोन फॉर दैट कमबैक्स. और अच्छा, मैं एक जल्दी से सवाल यहाँ पे इंटरव्यू कर दूँ. न्यूजीलैंड वाले मैच में दे प्लेइंग इन द रिंग ऑफ फायर, दे प्लेइंग इन द रिंग ऑफ फायर. न्यूजीलैंड वाले मैच पे बहुत सारे इनके बल्लेबाज हैं वो डीप में कैच आउट हुए हैं, उनकी एक गोल में. दे weren't clearing the boundaries. What is going on there? I mean, there was the question कि जी IPL में छोटी होती है बाउंड्रीज, यहाँ पर ये इनको बड़ी बाउंड्रीज मिल गई तो they're not clearing it. देखिए, दोनों रीजन हो सकती हैं. एक ये भी है, और दूसरा जो दुबई है उसकी जो पिच है वहाँ पे I mean, इतना आसान नहीं है.
वो विकेट्स का डिफरेंस। फाइनल में 190 195 हुआ था फिर मैंने। बात ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, फिर मोमेंटम नहीं मिला हुआ आपको और आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा। इसमें शेन वॉटसन का ये कहना था कि वो टोटल बिलीफ के साथ नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग आफ्टर द प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट स्पेशली यूएई में जब आपने कोई भी अटैकिंग शॉट मारने हैं तो वो फिर ज़रा से भी डाउट है आपके अंदर, ज़रा से भी आपने कहीं कमी छोड़ दी है तो 100% आप कन्विक्शन के साथ नहीं मार रहे हैं तो फिर यही है। अगेन ऑन द बाउंड्री मचा दे धूम।